Hello everyone, welcome to lecture on difference equation. In today's lecture, we are going to discuss rules for finding particular integral. As you know, in the last lecture, we have discussed how to find complementary function. And this complementary function and particular integral we required to find complete solution of our linear difference equation. In the last lecture, we have discussed what is linear equation, how to find complementary function. Now let's start with our rules of finding particular integral. See here, phi n into yn equals to f of n. Here phi n is a function of e and we are considering this is a linear difference equation. So we consider this equation number 1, this is linear difference equation. And for this function, if we are taking left hand side equals to 0, that is called homogeneous difference equation. And for left hand side homogeneous difference equation, we are get corresponding to left hand side, we are get complementary function, that is CF equals to, we are finding the values of complementary function. And if it is not equals to 0, if there exists any function in the right hand side, then we need to find particular integral. So if we want to find particular integral for this type of term, then the process is we have to take pi is equals to 1 upon phi of e into f of n. Here phi of e is a function of e. From the given equation, we write the whole equation. If we have given difference equation, then first step we have to convert it into e form. Once it is converted into e form, then take yn term common and remaining whole bracket contain function of e. That function of b we have to write in denominator. So we get 1 upon function of e into f of n. Actually this not into, it is an operator. 1 upon function of e, here e is an operator and 1 upon phi of e is again we get new operator. So this operator we are applying on this function f of n. This function comes from right hand side of equation 1. Now as per function f of e, we get different cases to find particular integral. So let's start with first case corresponding to f of n. The case number 1 is when f of n equals to a raised to power n. Here a is constant and our variable, that is n, is in the power of a. So f of n equals to a raised to power n, then here then pi equals to, for all the cases we are taking same equation number 1. For equation number 1 we are finding pi. So pi is 1 upon phi of e is as it is and f of n. So value of f of n here a raised to power n. So for this term pi is equals to 1 upon phi of e into a raised to power n. In this case, we are just replace e by a. If function is in the form of constant raised to power n, then we have to replace e by a. If we replace this e by a, then we get pi is equals to 1 upon phi of a into a raised to power n. And after replacing e by a, then this term is completely constant. That means we are solving. This is our solution for pi. But there is a one problem. If in case this phi of a, after replacing e by a, if this phi of a equals to 0, then 1 upon 0 is not defined. So if it is equals to 0, then our case is fail. So this is our answer if phi of a is not equals to 0. That means here e, then we get
pi equals to 1 upon phi of a into a raised to power n, and this is our final answer if it is not equals to 0. But in case if it is equals to 0, then what we do? It is possible to be 0. Here pi equals to a function of e into a raised to power n. It is 0 if we get the term e minus a raised to power some constant, suppose we take k. If this pi equals to 1 upon this function of e contain the factor e minus a, then if we replace e by a, then it is 0. This denominator become 0. Now if we get this type of term, then what we do? That is, if denominator is 0, then we have to use the important formula. Here the first formula for pi equals to 1 upon e minus a into a raised to power n. Here e is replaced by a, then this denominator is 0. If we get this denominator is 0, for this term, if we get this type of term, that is division contains factor, then the formula is n a raised to power n minus 1. If we get this type of term, then we use this formula for pi. For second, if it is pi is equals to 1 upon e minus a square a raised to power n. Here this bracket is repeated twice, then the formula is n minus 1 divided by 2 factorial into a raised to power n minus 2. Here it is 2, so it is a raised to power n minus 2. You can remember this formula in this way. Now the next formula is, if this bracket is repeated thrice, that is 1 upon e minus a bracket cube into a raised to power n, then the formula is n minus 1 n minus 2 divided by 3 factorial into a raised to power n minus 3. The next possibility of function f of n is, it may be cos an or sin an. Then we have to find pi. Here the case number 2 for cos an into sin or sin an. Then the pi is equals to, the term is 1 upon function of e into function. Here our function is cos an or sin an. So I write here, if it is cos an or it is maybe sin an. Now here we have to use the formula for cos an in the form of e. We know that cos theta is equals to e raised to power theta I plus e raised to power minus theta I divided by 2. Instead of cos theta we use this formula, and instead of sin theta we use e raised to power theta I minus e raised to power minus theta I divided by twice I. जस्ट हमें cos थीटा और sin थीटा को रिप्लेस करना है इन द फॉर्म ऑफ e. तो ये अगर e के फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे तो इस टाइप में कन्वर्शन के ये स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज हैं. अब इससे क्या होगा, देखिए, इफ़ आवर फंक्शन इज cos an and we are using this formula, then we get pi is equals to 1 upon function of e into e raised to power a n I plus e raised to power minus a n I divided by 2. Here 2 is constant, so we can take 1 upon 2 outside and this operator operate on this term. Then we can separate this term, here pi of e, and here it is e raised to power a I whole raised to power n, because ultimately this power term, if we take the product, then we get same term. So e raised to power ai
whole raised to power n is similar as e raised to power a n I. Just for simplicity we are writing in this form, and here the second term is 1 upon phi of e raised to power minus ai into n. Again it is similar to this term. Now if you observe this term, it is just like a raised to power n. Here see our case 1 is f of n equals to a raised to power n. Any constant raised to power n, then we have to replace e by a. So here this term is similar, this constant term raised to power n. So here we are just replacing e by e raised to power a I for this term, and here in the second term our constant is this one, that is in this case we have to replace e. Here we have to replace e by e raised to power minus ai, and obviously it is taken if denominator is not equals to 0. If it is 0, then we have to use our standard formula, which just, and similar way instead of cos theta if we have given sign, then same way we have to solve. Just instead of this plus we get this minus sign, and instead of this 2 we get twice I. Now the next is if f of n equals to n raised to power p, that is variable raised to power constant. Here the first, in these cases, first case is constant raised to power n is our variable, and in this case number 3, here constant is contained in the power of n. Now for this case number 3 we are taking pi equals to 1 upon, again same function of e is operate on n raised to power p. For this term, in case अगर क्वेश्चन इस केस नंबर 3 के फॉर्म में आता है, मतलब राइट हैंड साइड n रेज़ टू पावर p के फॉर्म में, तो हमें जो फैक्टोरियल नोटेशन हमने डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 5 और 6 में, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया है कि डेल्टा ऑफ x रेज़ टू पावर 5 फैक्टोरियल किस तरह से निकालना है, 1 अपॉन डेल्टा रेज़ टू पावर एनी टर्म किस तरह से निकालना है. तो यहाँ इस केस के लिए आपको फैक्टोरियल नोटेशन पता होना इम्पोर्टेंट है. वाई, देखिए अगर हमने यहाँ पे लिखा है 1 अपॉन ई और एक्स रेज़ टू पावर 5, अब इसे आप डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर पाओगे. वी हैव टू कन्वर्ट दिस एक्स रेज़ टू पावर 5, दिस इज आवर पॉलिनोमियल, and we have to convert this polynomial into factorial. If it is, suppose we are converting this x raised to power 5 in factorial form, that is x raised to power 5 factorial, and we are using, instead of e we can write 1 plus delta, because the relation between delta and e is e equals to 1 plus delta. So here we get 1 plus delta raised to power minus 1 x raised to power 5 factorial. Apply the binomial expansion for this term, then we get 1 minus delta plus delta square and so on x raised to power 5 factorial. And as you know, delta x raised to power n factorial is n x raised to power n minus 1 factorial. तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हमें इस टर्म को सॉल्व करना है. तो हियर ये हो जाएगा x raised to पावर 5 फैक्टोरियल माइनस डेल्टा x raised to पावर 5 फैक्टोरियल, तो ये होगा 5 x raised to पावर 4 फैक्टोरियल प्लस नेक्स्ट टर्म में ट्वाइस डेल्टा स्क्वायर है, तो ये 2 टाइम्स डिफरेंशिएट, ये होगा 10 x raised to पावर 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन. ऐसे ही करते हुए जो आपका लास्ट तक के हम आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं. तो इस केस में हमें ये वाला टर्म यूज़ करना है फैक्टोरियल नोटेशन का. तो अगर आप लोगों को फैक्टोरियल में किस तरह से पॉलिनोमियल को कन्वर्ट करना है ये अगर नहीं पता होगा, तो प्लीज़ आप लोग फैक्टोरियल नोटेशन का लेक्चर्स देखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है और आप प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हो.
ठीक है। तो ये हो गया इसका कंसेप्ट फैक्टोरियल नोटेशन का। अब देखिए इसको सॉल्व करते वक्त हम क्या करते हैं। फर्स्ट तो इस एग्जाम्पल को, इस टाइप के जो क्वेश्चन रहेंगे उसको सॉल्व करने के लिए वी हैव टू पुट e इज इक्वल्स टू 1 प्लस डेल्टा। ये मैंने जस्ट अभी बताया कि e इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस डेल्टा। तो हमें पुट करना है इन डिनोमिनेटर e इज रिप्लेस बाय 1 प्लस डेल्टा, जो रिलेशन है वहाँ से आएगा। और ये जो n⁻p है इसको फैक्टोरियल नोटेशन में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। और जैसे रिक्वायरमेंट रहेगी उस हिसाब से करना होगा। तो एग्जांपल से ये और भी क्लियर होगा। उसके लिए आपको नेक्स्ट लेक्चर्स देखना पड़ेगा कि इसके एग्जांपल्स किस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। तो हियर इफ़ वी रिप्लेस दिस टर्म देन वी गेट 1/5 ऑफ 1 प्लस डेल्टा बिकॉज वी आर रिप्लेसिंग e बाय 1 प्लस डेल्टा n⁻p। आफ्टर रिप्लेसिंग वी हैव टू सब डिनोमिनेटर इन न्यूमरेटर। जैसे हमने यहाँ पे देखा है 1 जो 1 प्लस डेल्टा था उसको हमने नेक्स्ट टर्म में क्या किया है, न्यूमरेटर में शिफ्ट किया है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी क्या करोगे, इस टर्म को हम न्यूमरेटर में शिफ्ट करोगे, जिसकी वजह से इस होल टर्म का रेस्ट्रिक्ट पावर -1 हो जाएगा n⁻p। और यहाँ पे जो टर्म आएगी उसके लिए हमें क्या करना होगा, फॉर्मूला यूज़ करना है, दैट इज़ बायनोमियल एक्सपांशन। तो हियर ये फॉर्मूलेस अगर नहीं पता है तो प्लीज़ नोट डाउन करिए। हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे 1 प्लस डेल्टा रेस्ट्रिक्ट पावर -1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा स्क्वायर माइनस डेल्टा क्यूब एंड सो ऑन। ये फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। और सेकेंड रहेगा, अब यहाँ पे प्लस था तो अल्टरनेट प्लस माइनस आ गया। सेकेंड नेक्स्ट है 1 माइनस डेल्टा रेस्ट्रिक्ट पावर -1 इक्वल्स टू 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर प्लस डेल्टा क्यूब एंड सो ऑन। तो यहाँ पे अगर मिडल में माइनस साइन है तो ऑल टर्म क्या होंगे, प्लस के फॉर्म में। तो ये दो फॉर्मूलेस इसमें यूज़ करना होगा। और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट यही है इसमें कि e को आपको 1 प्लस डेल्टा से रिप्लेस करना है। और ये फैक्टोरियल का जो कन्वर्शन है वो भी आपको आना चाहिए अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट केस। केस 3 इज इफ f of n इक्वल्स टू a⁻n इंटू n⁻p। तो ये टर्म प्रोडक्ट के फॉर्म में। अब देखिए ये इम्पॉर्टेंट केस है, तो इसमें किस तरह से करना है। हियर वी राइट अगेन सेम pi इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ 1/फंक्शन ऑफ e। ये होगा हमारा ऑपरेटर, ऑपरेट ऑन आवर फंक्शन है a⁻n n⁻p। इस केस में हम क्या करेंगे, ये जो प्रोडक्ट के फॉर्म में टर्म है जिसके वजह से हमें सॉल्व करने में प्रॉब्लम जाएगा, तो उसके लिए एक टर्म को हमें लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना है। तो ये ऑपरेटर है और ये ऑपरेट इस पूरे टर्म के ऊपर हो रहा है। तो जैसे ही मैं इसको इस लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करूँगी इस ऑपरेटर के, तो इसका मतलब है ये ऑपरेटर के बाहर निकलेगा। जस्ट लाइक देखिए यहाँ पे सपोज हमने इस तरह से लिखा है, तो इसका मीनिंग क्या होता है, ये डेरिवेटिव है x² का जिसको हम लिखते हैं ट्वाइस x। बट अगर मैंने इस तरह से लिख लिया x d/dx ऑफ x, तो इसका आंसर क्या आएगा, x। तो ये क्या है, डेरिवेटिव इज ए ऑपरेटर विच इज ऑपरेट ऑन आवर फंक्शन x², देन वी गेट डेरिवेटिव ऑफ x² इज 2x। सिमिलर वे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अगर x डेरिवेटिव के आउटसाइड में, मतलब ये ऑपरेटर के बाहर है, तो उसके ऊपर ऑपरेटर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जस्ट जहाँ पे ऑपरेटर जिस फंक्शन के ऊपर ऑपरेट हो रहा है उसी के ऊपर वर्क होता है। तो ये डेरिवेटिव जिस तरह से ऑपरेटर है उसी तरह से 1/phi ऑफ e इज़ द ऑपरेटर विच इज़ ऑपरेट ऑन दिस फंक्शन। तो मैं जो बोल रही हूँ कि a⁻n को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करना है, तो हम एक्चुअल में लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट नहीं करते, जस्ट समझने के लिए यहाँ पे। तो ये जो शिफ्ट हम करने वाले हैं, तो देखिए ये शिफ्टिंग हम जस्ट डायरेक्टली शिफ्ट नहीं करते, क्योंकि अगर डायरेक्ट शिफ्ट करोगे तो मीनिंग क्या हो जाएगा, इससे क्लियर हो रहा है, मीनिंग चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों सेम नहीं है। दैट मीन्स ये अगर दोनों सिमिलर नहीं है तो ये इस तरह से किसी वेरिएबल को आप ऑपरेटर के बाहर ऐसे ही नहीं निकाल सकते। तो देखो
यहाँ पे भी हमें a रेज़ टू द पावर n को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करना है, तो ये डायरेक्ट शिफ्ट नहीं होगा। क्या चेंजेस होते हैं देखिए, ये अगर हम a रेज़ टू द पावर n को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर रहे हैं तो ये जो हमारा फंक्शन है फाई, ये किसका फंक्शन बन जाएगा, अभी e इज रिप्लेस हो जाएगा a e से। यहाँ पे जो फाई ऑफ e जस्ट e का फंक्शन था, जैसे ही हमने a रेज़ टू द पावर n को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट किया तो हमारा फंक्शन ऑपरेटर जो है वो चेंज होके 1/5 ऑफ a e ये हो जाएगा, और ये n रेज़ टू द पावर p एज इट इज़। अब ये तो a इज कांस्टेंट, जो भी टर्म रहेगा और उसमें e कंटेंट रहेगा। तो आफ्टर दिस स्टेप वी हैव टू जस्ट यूज केस नंबर 3। जो केस नंबर 3 हमने देखा था n रेज़ टू द पावर p का, वो यहाँ पे आपको अप्लाई करना होगा टू सॉल्व दिस टर्म। to use here, so use case 3. Case number 5 is if f of n is a raised to the power n into phi of n. तो ये केस जस्ट लाइक एज केस नंबर 4। जैसे केस नंबर 4 में भी क्या था, प्रोडक्ट में दो फंक्शन थे, एक है a raised to the power n और दूसरा वहाँ पे phi of n की जगह पे पर्टिकुलर फंक्शन गिवन था n raised to the power p। अब अगर n raised to the power p के सिवा कोई फंक्शन है तो ये जनरल केस में phi of n लिखा है, तो ये phi of n की जगह पे n raised to the power p हो सकता है, या फिर अगेन a raised to the power n भी हो सकता है, साइन कॉस, इस तरह से फाई की एनी वैल्यू रह सकती है। तो इस केस में अगर फंक्शन है तो देन ये पी आई फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करेंगे पी ऑफ पी आई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन फंक्शन ऑफ ई, दिस ऑपरेटर ऑपरेट ऑन ए रेज़ टू पावर एन फाई ऑफ एन। अब देखिए जैसे हमने केस नंबर 4 में क्या किया था, इस ए रेज़ टू पावर एन को लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया था, जिससे क्या बन गया था, ई रिप्लेस हो गया था ए ई से। द सेम केस ये ए रेज़ टू पावर एन वी राइट 1/5 ऑफ ए ई, ये फाई रिपीट हो रहा है तो हम इसके जगह पे एक न्यू फंक्शन लिखेंगे, सपोज जी ऑफ एन इज फंक्शन ऑफ एन, तो ये रहेगा जी ऑफ एन। तो इस तरह से हमें यूज़ करना है। अब ये जो नेक्स्ट केस आपको अप्लाई करनी है तो इसके लिए क्या होगा, इट डिपेंड ऑन जी ऑफ एन। अगर जी ऑफ एन साइन है तो केस नंबर 2 अप्लाई, बी रेज़ टू पावर एन है तो केस 1। इन दिस वे नेक्स्ट केस जो भी आपको यूज़ करना है वो डिपेंड करेगा जी ऑफ एन किस तरह से। तो ये हो गया हमारे cases to find particular integral. In the next lecture, we discuss example on all these cases. Thank you. Like, share and subscribe.